After looking into the objectives and the selection of objectives for curriculum development, then we had looked at that what kind of educational experiences or learning experiences can be suggested as curriculum developers. हमने देखा और हमने लर्निंग एक्सपीरियंस की तारीफ भी की, जिसमें हमने कहा कि ये वो एक्टिविटी है और ये वो एक्सपीरियंस है जो क्लासरूम में एक टीचर ने बच्चे को प्रोवाइड करना है. हम ये भी जानते हैं कि हर ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए हमें किसी न किसी किस्म का एजुकेशनल एक्सपीरियंस क्लासरूम में देना पड़ेगा, तभी हमें मालूम होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव किस हद तक पूरा हो गया. हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस की सिलेक्शन के लिए कुछ प्रिंसिपल्स भी देखे और उसमें तफसीलन बात भी कर चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अब हम किस तरह से वो कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस में शामिल करें जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं. लिहाजा द टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस. व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स? कौन सी खसूसियात हैं जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस में होनी चाहिए या एजुकेशनल एक्सपीरियंस में होनी चाहिए. यहाँ पर ये याद रखिए, जब हम लर्निंग एक्सपीरियंस या एजुकेशनल एक्सपीरियंस कहते हैं तो हमारी उससे मुराद ये है कि क्लासरूम में जब एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाने के उस अमल में किस किस्म की एक्टिविटी या किस किस्म का काम एक टीचर को करना होगा ताकि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. हम ये भी जानते हैं कि देयर इज़ ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कंटेंट नॉलेज की डेवलपमेंट के लिए या नॉलेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जो हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की महारतें या मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स बच्चों में डेवलप हो. और तीसरी तरह के ऑब्जेक्टिव्स में हम कहते हैं कि हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड और बिहेवियर डेवलप करना चाहते हैं. सो वी हैव ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. और यहाँ पर यह इशू खड़ा हो जाता है कि जब हमारे पास इतनी तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने अपने करिकुलम में शामिल कर दिए हैं और हर टॉपिक के लिए हमें कंटेंट नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट और एटीट्यूड की डेवलपमेंट पर ख़ास तौर पर तवज्जो देना होगी. जब ऑब्जेक्टिव्स इतने ज़्यादा हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि एक करिकुलम में बीइंग करिकुलम डेवलपर आप इतने सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सजेस्ट कर सकें जो कंसाइज भी हों और टीचर्स के लिए बामानी भी बन जाएं? हकीकतन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है. लिहाजा यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि हम ख़ास तरह के ऑब्जेक्टिव्स और किस किस्म की हम महारतें उसमें डेवलप करना चाहते हैं एक सैंपल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे कि उनके लिए किस किस्म के लर्निंग एक्सपीरियंसेस या एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को आप करिकुलम में सजेस्ट कर सकते हैं जब आप करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस कर रहे होंगे. So we will have a sample of kind of objectives and we will look into the types of learning experiences which can be given in a classroom. और याद रहे कि हम ये एलिमेंट्री लेवल पर बात कर रहे हैं. लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू डेवलप थिंकिंग स्किल्स. अमूमन इस तरह के ऑब्जेक्टिव शामिल किए जाते हैं. नंबर 2 पे हमने देखा लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू एक्वायर इंफॉर्मेशन, then learning experiences to develop social attitude and learning experience to develop interest. आप यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं कि हमने यहाँ इसमें कहीं पर भी कंटेंट नॉलेज की डेवलपमेंट की बात नहीं की और ना ही हम उस तरह से ऑब्जेक्टिव को लिख रहे हैं. जब हम कहते हैं कि कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं जो इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने में हेल्पफुल होंगे या ऑब्जेक्टिव है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए, तो वहाँ पर कंटेंट नॉलेज ही से हमारी मुराद है. आइए देखते हैं वन बाय वन कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव इस तरह का हो तो हम किस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंसेस को तरतीब दे सकते हैं. लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू डेवलप थिंकिंग स्किल्स. Now when we say thinking skills, what is thinking? Thinking generally means that it's a kind of behavior where we can relate to or more than two ideas, rather than we say kids have to memorize something and they have to recall and they have to remember something and then to repeat the same thing after recalling. Generally इस किस्म का मीनिंग थिंकिंग से लिया जाता है. जब हम थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने की बात करते हैं तो हमारी मुराद ये है कि हम ये चाहेंगे कि थिंकिंग शुड बी इन्वॉल्व्ड इन ए प्रोसेस where children have to draw similarities
or they have to draw comparisons between objects or any kind of process. So جب وہ اس کو پروسیس کو کر سکتے ہیں اور similarities یا differences کو identify کر سکتے ہیں and they can make a comparison, then we would say that they have developed an ability to think and to come to any conclusion. Thinking can be inductive, it can be deductive and it can be logical. یہ یاد رہے کہ کسی بھی طرح کا لرننگ ایکسپیرینس جب کلاس روم میں پرووائڈ کیا جاتا ہے تو اس میں ایک ہی قسم کی تھنکنگ انوالو نہیں ہوتی. لہٰذا ہم نے یہاں پر تھنکنگ کو تقسیم کر دیا یا کلاسیفائی کر دیا کہ ہم کہتے ہیں کہ تھنکنگ انڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے, ڈیڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے اور تھنکنگ لاجیکل بھی ہوتی ہے. واٹ از انڈکٹیو تھنکنگ؟ تھنکنگ when you induct something from any kind of processes or we have looked at any kind of process or any phenomena, تو ہم وہاں سے کچھ جنرلائزیشنز نکال لیتے ہیں. کسی بھی ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے مثلاً آپ کے پاس اینیملز اور برڈز کی اگر تصویریں ہیں اور یہ انفارمیشن آپ بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بچے ایک جنرلائزیشن اس سے ڈرا کر سکتے ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ انڈکٹیو تھنکنگ ویئر they are telling us that these are birds and these are animals on the basis of the characteristics which they are seeing in the given activity. اور یہ specific قسم کی انفارمیشن سے ہم generalization کو draw کر سکتے ہیں. When we say deductive thinking, in deductive thinking it is an ability where kids they are applying one or more generalizations to specific cases or specific pieces of information. So آپ کے پاس ایک انفارمیشن ہے اور آپ نے دی گئی ایکٹیویٹی میں اس جنرلائزیشن کو اپلائی کرنا ہے اور ڈیڈیوس کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. یہاں پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر پہلے بتائی گئی ایکٹیویٹی میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ برڈس ہیں اور یہ اینیملس ہیں, سو آپ ان کو ایک ڈیٹا دکھا کر اور جنرلائزیشن ہم نے کیا بنائی کہ تمام برڈس کے پر ہوتے ہیں اور 4 ٹانگوں والے جانور کہلائے جاتے ہیں. سو بچے اس انفارمیشن کو ریلیٹ کر لیں گے. دیٹ مینس دیٹ دے آر تھنکنگ ڈیڈکٹیولی اینڈ دے آر میکنگ اے لنک بٹوین دا جنرلائزیشن اینڈ دی ایکٹیویٹی وچ از گیون ٹو دیم ان دا فارم آف ڈیٹا ان دی کلاس روم. وین وی سے دیٹ دیر گاٹ ٹو بی سم کائنڈ آف لاجیکل تھنکنگ. واٹ از لاجیکل تھنکنگ؟ اٹ انوالوز دی ارینجمنٹ آف assumptions. It can be the arrangement of hypothesis and the conclusions. جب ہم لاجیکل تھنکنگ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی assumptions بنائی گئی ہیں اور ان assumptions کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی assumption ایسی ہے جس کو ہم hypothesis کا نام دے سکتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ hypothesis is a statement which is testable, جبکہ assumption کو ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے. اور اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم کچھ ریزلٹس ڈرا کر لیتے ہیں جسے ہم انفرنس یا کنکلوژن کہتے ہیں. سو ایبلٹی ٹو لک ایٹ سم کائنڈ آف ڈیٹا اور اینی پروسیس اینڈ دین ٹیسٹنگ دیٹ پروسیس or testing that data and then coming to any conclusion on the basis of the activity which is given as learning experience in the class, that is called as logical thinking. So جب آپ thinking develop کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں being curriculum developer یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم thinking صرف thinking میں ہم صرف لاجیکل تھنکنگ نہیں ڈیولپ کر رہے, انڈکٹیو تھنکنگ نہیں ڈیولپ کر رہے اور نہ ہی ہم صرف ڈیڈکٹیو تھنکنگ ڈیولپ کر رہے ہیں, بلکہ اٹس اے کمبینیشن آف تھنکنگ وچ از بینگ ڈیولپڈ تھرو اینی کائنڈ آف لرننگ ایکسپیرئنس.